is more going to be on a Gen-Man level. I'm sure you guys know what is Gen-Man, right? It's more of general management sort of thing. Plus, so first thing is MSc curriculum, right? That the MSc curriculum is predominantly based on finance as such. From day one, you start learning finance. Whereas MBA is more going to be on a Gen-Man level. I'm sure you guys know what is Gen-Man, right? It's more of general management sort of thing. Plus, in the depth, when you talk about. Sir, sorry to interrupt. Can you just click on that continue? Because it is popping on the screen and we can't see what you're writing. I'm sorry, I didn't get that. In my screen, I can see a dialog box in between. This meeting is been recorded and I can see that you haven't clicked on continue. Is anyone facing the same problem? You have to click on continue. Okay. Okay, sorry. Fine. So when you talk about the depth, right? The depth is going to be more in the MSc Finance compared to MBA. Okay, compared to MBA, right? That's number one. Technical know-how. Technical know-hows are going to be more as far as your MSc is concerned and not MBA. Okay. So these are the things that you can say that, this is where the kind of change that MSc Finance brings to your resume. And when you talk about curriculum, you need to talk about certain subjects. You need to talk about certain subjects, financial modeling, statistical tools and all that. Mindset development. Okay, mindset development. From day one, for the fact you're learning finance, right? It helps you a lot. MBA, on the other hand, is nothing but bird's eye view. It's nothing but bird's eye view. Jahan pe they will be telling you things on a very high level. It's like bird's eye view, 1,000 feet. तो ये चीजें आपको बतानी है MBA versus MSc Finance कि यार हमें MSc Finance इसलिए ज्वाइन करना है because I believe that again technical know-how में you can talk about expertise, you can talk about hands-on practice, you can talk about maximum exposure towards finance as a subject. Then when you talk about your internships, predominantly they are going to be in the finance domain. Live projects which will be again in the finance domain. तो ये चीजें आप रख सकते हो as far as your MSc versus MBA is concerned. इतने pointers अगर आप बता दोगे PI में should be more than enough. Should be more than enough. On the other hand, what you need to understand is it's a unique preposition offered by jbims. Offered by jbims because not many institutes giving MSc Finance in the market. I think it's JB and NMIMS, but that thing is not that great. I mean, JB MSc Finance is much better than the Narsimon MSc Finance. So these are the points that you can talk about. Simple. इसमें कोई doubt है? Are these good enough? इसमें कोई doubt है? Sir, had a doubt in the last point, a unique preposition offered by JBMS. Can they counter question like you are just opting MSc Finance for the brand JB? No. Hey, अभी तो placement भी टट्टी हो गया MSc Finance का. I don't know what happened this year. That's okay. You can show interest. That's a part and parcel of the program. But sometimes you do very well. As a college, you do very well. Now this year, if you look at the overall finance as a domain, it's been a bit hit, right? Because of COVID and all that, right? So ऐसा नहीं है कि placement बुरी हुई है. ठीक है, it's just that it takes I need some water. It's just that you just have to wait for it. So they had a great year previously. This time probably not. Next year they may, right? So it's not about it's about unique proposition by JBMS. JBMS not as a brand, but as a college I'm talking about. So JB has the program MSc. That is the reason I'm applying for it. Tomorrow if Sydenham has it, I'll apply there also. Because MSc as a concept is pretty cool. And when JB offers it, it's a better thing. Because then you are backed by the brand which is known for finance, which is a finance pedagogy, right? The brand which has been known in the country for finance education. So that's how it helps. So these are the points that you need to tell them. Ye mera point of view hai, as far as MSc Finance is concerned. Any questions over this? Any questions over this? Technical know-how,
don't understand that point. टेक्निकल नो हाउ का मतलब होता है when you only talk about MSc Finance as a program, MSc Finance is too much into finance, right? They'll teach you everything in depth. तो अगर मैं एक MBA फाइनेंस का बंदा पकड़ूं और एक मैं MSc फाइनेंस वाले का एक बंदा पकड़ूं, तो MSc फाइनेंस वाले बंदे का टेक्निकल नो हाउ as far as finance is concerned, concept, application, understanding, market condition, he will be pro compared to MMS. Again, खुद की मेहनत भी यहाँ पे काम आती है. Not everybody will be studying on their own, right? But हाँ, MSc का जो टेक्निकल नो हाउ है वो ज्यादा होगा बिकॉज उसके सब्जेक्ट्स वैसे डिजाइन करे हैं. उनकी पूरी जो लाइव प्रोजेक्ट हो गया या फिर उनके जो सबमिशंस वगैरह होते हैं वो अकॉर्डिंगली करे जाते हैं. वैसे अगर आप एमबीए में चले जाते हो, एमबीए में आप देखोगे आपको मार्केटिंग भी करना है, आपको एचआर भी करना है, आपने ऑपरेशंस भी करना है, सो मेनी थिंग. तो यहाँ पे वो जो टेक्निकल नो हाउ होता है एमएससी वाले बच्चों का ज्यादा होता है बिकॉज उनको ज्यादा फाइनेंस पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड दे आर लाइक +2 as far as MBA is concerned. Compared to MBA folks, MSc Finance will be a little bit ahead of the MMS guys for that matter. That's the way it works. Any questions so far? Any questions in these points? Any point that you want me to add, which you believe, you know, sir, ये ऐसा reason भी हो सकता है क्या? Guys, anything that you think कि you know सर ये सोच रहा था मैं, ऐसा हो सकता है क्या? Any way of linking our engineering, या मतलब I'm from engineering, तो any way of linking the engineering subjects to finance, ऐसा कुछ कर सकते हैं? Like in chemical engineering, we had a subject known as which dealt with economics. So it dealt with break-even point, face value, depreciation. I was thinking of linking something like that. That is your answer to why MSc Finance. That is not an answer to why MBA versus MSc. Okay, correct, yes. समझा? Correct. हाँ. So that's that. ठीक है, fine. So curriculum के बारे में बात करेंगे, subjects के बारे में बात करेंगे. MBA is going to be more on general management. MSc will give me a lot of depth knowledge, right? MSc will have a greater technical know-how as far as finance as a domain is concerned. MSc will have a great mindset development. Mindset development का one step, guys. Okay, can you hear me? Can you hear me? Yes. Fine. So technical know-how मुझे ज़्यादा मिलेगा MSc Finance में, मेरा mindset development होगा ज़्यादा MSc Finance में. ऐसा क्यों बोला जाता है? Because जब हम बात करते हैं MBA का, MBA में बहुत ज़्यादा चीजें होती है. मार्केटिंग पढ़ो, HR पढ़ो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ो, स्ट्रैटेजी पढ़ो, ये वो. तो वो एक माइंडसेट चेंज बहुत बारी होता है कि यार मैं फाइनेंस करूँ या फिर मैं मार्केटिंग करूँ, मैं HR भी कर सकता हूँ, मैं ऑफिस भी कर सकता हूँ, मैं स्ट्रैटेजी भी कर सकता हूँ. यहाँ पे तुमको पता है, it's like it's going to be just one thing and you will have to go with that, right? But that is very much important as far as finance is concerned. MBA, bird's eye view, MSc, in depth, in detail, unique proposition offered by jbims as far as the program is concerned. Because MSc जो concept है, वो actually Indian का है नहीं. It's not that popular as far as the Indian universities are concerned. It's basically popular in states, देखा जाए तो. But वो वाला फंडा यहाँ पे अप्लाई करना और एक अलग तरीके से इसको प्रेजेंट करना, I think that's a really nice thing. Because if there is somebody who is doing MS in finance from, let's say, or MS finance from states or let's say UK, and अगर यहाँ भी बच्चे अगर available है, that too from jbims का ना colleges, जाके अगर IIMs भी चालू करते हैं, तो भी मुझे लगता है कि ये बेस्ट है. ये actually आपको स्टैंडिंग देगा इंटरनेशनल मार्केट में. Fine. So this should be your answer as far as why not MBA and why MSc Finance. अब कोई क्वेश्चन है तो बिंदास पूछो. So if we compare curriculum of MBA Finance and MSc Finance, so what are the differences between them? वो तुमको देखना पड़ेगा, वो तुमको स्पॉट करना पड़ेगा. That is the reason I want you to go through the entire curriculum. मैं सब्जेक्ट देख लो एक बार MSc Finance के. मैंने कहा ना कि MSc वाले आपको ज्यादा स्टैट्स पे बात करेंगे, फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह होगा, आईपी के सब्जेक्ट्स होंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह के सब्जेक्ट्स होंगे, एंड ये सब्जेक्ट आपको डे 1 से चालू होंगे. जहां पे MBA में ये सब्जेक्ट आपको सेकेंड ईयर में आएंगे. मतलब MBA में सेकेंड ईयर में जो इंपॉर्टेंट चीजें आप पढ़ोगे वो यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ लोगे, एवैल्यूएशन वगैरह.
कॉर्पोरेट फाइनेंस वगैरह एक बार जाके करिकुलम देख लेना एमएससी की वेबसाइट पे, इट विल हेल्प यू। सर मैंने करिकुलम देखा इसका एमएससी फाइनेंस का, लेकिन एमबीए का नहीं देखा था, बस इसलिए पूछा। एमबीए में क्या होगा, मार्केटिंग होगा और क्या। Sir, can they ask instead of MSc Finance, please go for CFA or like? No. So when you talk about CFA level 1, CFA level 2, CFA level 3, ठीक है, चलो इसको भी लिख लेते हैं। Okay, that's a good question. MSc Finance versus CFA. ठीक है. Now, what's the problem here is when I talk about MSc Finance versus CFA as a program, see, MSc is a different program altogether. CFA is a professional qualification recognized by the international bodies, and it's offered by AIMR, which is American Institute of Management. What the fuck? मैं भूल गया. CFA Institute. CFA is offered by AIMR. My goodness, मैं भूल कैसे गया. AIMR. Yeah, that's CFA. This American Institute of what? This is like what? Research is something I'm sure. I'm not sure what the M stands for. Is it management? Okay, we'll think about it anyway. Fine, should be management. I should not be. Association for Invest Management and Research. Okay, M for management. Okay, fine. Now coming back to the point, CFA is a professional qualification given by AIMR. MSc is given by jbims. It's university degree. Now this is a bare minimum thing, right? This is like level 1. What is level 2? Level 2 is CFA is a self-paced program. CFA is a professional qualification, self-paced program. CFA level 1 and MBA, rather CFA level 1 and MBA are close by. Okay. In CFA level 1, level 2, level 3, you at the end of the day, if you go and check, I did not give my CFA. मैंने मेरा CFA complete नहीं करा because by then I understood कि यार CFA खाली एक नाम की चीज है, जॉब मिलने के लिए काम आती है, हवा हो सकती है थोड़ा बहुत प्रोफाइल पे, and at the end of the day it's purely portfolio management. अगर हम CFA के बारे में बात करते हैं, it is purely portfolio management, which is CAPM, risk reward, so and so forth. So वैसे देखा जाए तो जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है जो इंडिया में काम करते हैं CFP और जो CFA है उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है. Now ये चीज बड़ी डिबेटेबल है for those who love CFA as a program, but from my perspective, a CFA does financial planning for an institution, a CFP does financial planning for an individual. So when you talk about CFA, predominantly CFA talks more about portfolio management. If you go and check AIMR की website पे CFA का curriculum and the percentage attached to the subjects, you will see maximum percentage are given towards portfolio management. ये वो subjects है जो portfolio management में ज़्यादा काम आते हैं, उनके लिए ज़्यादा चीजें. Valuation हो गया, derivatives हो गया, इतना weightage उसको नहीं है, right? तो CFA का ये बहुत बड़ा disadvantage है. But you don't have a lot of qualifications in the market, in the global market, which are developed the way CFA has been developed. You talk about SEMA, right? You talk about SEMA. What happens in SEMA? SEMA is a combination of CFA and management accounting. Management accounting अलग होता है, financial accounting अलग होता है. Financial accounting shareholder के लिए होता है, management accounting management के लिए होता है. तो उसमें वो बहुत ज्यादा चीजें आ गई, स्ट्रैटेजी आ गया, ये आ गया, वो हो गया. CFA में उन्होंने खाली फाइनेंस रखा है, बाकी चीजें ज्यादा उन्होंने छेड़ी नहीं है. तो CFA का ये भी एक डिसएडवांटेज है. On the other hand, CFA does not get you ready for management education access, because if I'm a CFA, I know everything from the market perspective. I know everything from the valuation, not everything from the valuation perspective, but I know basics of finance here and there. I know how to calculate and then use the Calci and use the Excel format. But can I take decisions? I cannot. So what happens here, a lot of CFAs, they get onto the job, work for 5, 6, 7, 8 years, slog their ass off,
learn management stuff, and then get those creamy layer profiles in the corporate. तब जाके ये खुलता है, तब जाके उनको वो अंडरस्टैंडिंग आता है बिजनेस का क्या करना है. जैसे अगर मैं बात करूं in my field, in the trading, calculating the risk, doing the derivative valuation, it always helps. Having CFA knowledge always helps, no doubt about it. But अगर मैं बात करूं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट का गॉड लेवल क्वालिफिकेशन इज FRA, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का जो है that's FRA. Then comes PRA. So these two are different ballgame altogether. CFA is more towards equity front, not more into debt front. Debt is more of risk management. Again, that becomes a disadvantage for CFA, right? CFA cannot teach you decision making as far as financial stuff is concerned. So if you are a CFA and if you want to take a decision, you are making equity research ka report, you are doing a valuation, but you have no fucking idea what is happening in the market. You don't know economics क्या बोलता है, you don't know company का fundamental क्या है, you don't know company का product life cycle क्या है, कि कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है, तुमको कुछ भी आइडिया नहीं है. Then you cannot map वो बिजनेस इनटू नंबर्स. तुम खाली नंबर नहीं चढ़ा सकते हो एक्सेल पे, तुम खाली नंबर नहीं बता सकते हो एक्सेल पे, राइट? एज अ ट्रेडर इवन टुडे अगर मुझे कोई स्टॉक बाय करना है, जैसे मैंने पेज इंडस्ट्रीज बाय करके रखा है, right? If I want to buy some stock, right, I cannot buy the stock ऐसे in the air. What I need to understand is, if I am buying this stock, I need to understand the fundamentals of the business. What are the promoters? Who's the management? Promoter के पास stake कितना है? Corporate governance क्या बोलता है? कितना साल का मार्केट का स्टैंडिंग है? डेट कितना है? अब कुछ बोलते हैं लोग डेट वाली कंपनियां मत लो, बट कुछ कंपनी जो डेट वाली होती है, दे आर प्रीटी सेक्सी, यू कैन बाय देम आल्सो, राइट? तो जब सब चीजें मैं एक बार ही देखता हूँ, राइट, मैं एनालाइज करता हूँ, फिर मैं थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो देखता हूँ. I try to tie up the numbers. And then I take a decision. Okay, you know what? The company is great. They're doing a great business. I think I'm quite bullish on this company. ये आगे जाके ग्रो करेगा. इसका वैल्यूएशन 2x, 3x, 4x, 10x होगा. अब जो भी स्टार्टअप्स आते हैं बहुत बड़े-बड़े, उनकी वैल्यूएशन होती है 10x, उनकी वैल्यूएशन होती है 5x. नाइका क्यों 10x ग्रो किया? नाइका क्यों 10x ग्रो किया? Is it because of Nyka's financials? No. It's about Nyka's business model. What Nyka can do, what business potential Nyka has, वो मैंने फ्यूचर में देखा, मुझे बहुत तगड़ा लगा, बहुत सेक्सी लगा, उसको मैंने आज डिस्काउंट करा, और उसके चलते मैंने कहा कि भाई अगले 5 साल में ये कंपनी 5 टाइम्स बढ़ने वाली है. अब वो बढ़े ना बढ़े, we have no idea, but for the fact वो बिजनेस मुझे समझ में आता है कि इंडस्ट्री क्या बोलता है, वो चीजें एमबीए में कल्ट वे में पढ़ाई जाती है. So you learn Philip Kotler, who's a marketing guru, and you understand how company kind of places itself. Then you come towards the subject called as strategic management, right? One of my favorite subject of all time. Strategic management, where you learn what's the strategic landscape of the company, how company is building its business step by step, what's the strategic architecture of a company, how company is been placing itself in the market. जैसे अगर हम बात करेंगे नाइका, no, not Nyka. The hell, what's the name of the what was the name of that retail company? बहुत बड़े उनके malls वगैरह होते हैं. Future Retail. अरे बेटा, it's a foreign company, फर्नीचर वाली कंपनी. वो तो फक है, वो वॉलमार्ट जैसी बहुत बड़ी कंपनी है यार. हाँ सर, बैंगलोर में आई है, क्या नाम है उसका? हाँ, बैंगलोर में. Hey, DMart I know na dude, come on. IKEA sir. हाँ, IKEA. IKEA. कौन बोल रहे DMart ला मैं रोज जातो. Shut up. DMart I know. IKEA. See, IKEA has a very different policy altogether as far as the pricing is concerned. They are very aggressive as far as their pricing is concerned, right? So now I forgot मैंने IKEA का example क्यों लाया. But ठीक है, try my level best to come back to the point again. So you talk about Strategic IKEA. management. हाँ, strategy, right? So how IKEA places itself, that's called as brand placement, that's called as brand positioning, right? Walmart अपने जैसा this what this big bazaar,
बहुत चिंदी लगता है मेरे को, because they give off only on Wednesday. Walmart gives off 365 days. How they place themselves in the market, what is the brand positioning, right? तो ये सब चीजें आप स्ट्रैटेजी में पढ़ते हो, और ये बहुत कल्ट चीज होती है, मतलब ये खुल जाता है सदियों के लिए। अगर मेहनत करेगा तो टाइम पास करेगा तो लग जाएंगे, बट हाँ ऑन दी अदर हैंड जब आप ये चीजें समझते हो एमबीए में, एंड जब तुम वो फाइनेंस सीखते हो, एंड दैट इज द रीजन इफ यू टॉक अबाउट इन जनरल वे, एमबीए एंड सीएफए is a deadly combination. MBA and a CFA is a deadly combination because you get best of both the world, and that's where you build on it. Can only CFA give you that kind of exposure? Absolutely not. Can only MBA give you that kind of exposure? Absolutely not. ये दो चीजें समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो CFA में पंगा आता है, राइट? आगे चलेंगे जहां तक CFA का सवाल है और MSc का सवाल है, MSc is something that has been taught to you by the faculty. So you have somebody to hold your hand, walk you through. You've got a mentor. You've got somebody who can tell you. CFA curriculum gets updated on a yearly basis, no doubt. But CFA caters to the global finance. Okay, CFA caters to global finance. The Indian financial position or the Indian financial situation is different than the international. We are not into IFRS yet. We don't use US GAAP yet. We are more into IGAP, Indian GAAP, right? We follow Indian accounting standard, that's IAS. तो आप जो ग्लोबल लेवल पे बातें करते हो वैल्यूएशन वगैरह के बारे में, वो सेम फंडामेंटल, वो सेम फंडे हमारे यहाँ पे काम नहीं करते, because our economy is more dynamic and changes happen like this. So we have to adjust ourselves with those changes wherein CFA lacks. Is this clear or bouncer? ये समझ रहे हैं bouncer जा रहा है? Yes sir. Yes sir. Yes sir, got it. मैं बहुत लो लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, बहुत लो लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना लेवल इसमें ऐड भी नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम जीरो लेवल पे पढ़ा रहा हूँ आपको, तो नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, because I can't go beyond like below this, sure. तो ये CFA में ऐड नहीं होता है, so CFA is a very general thing, it doesn't consider something called as a geographical advantage or disadvantage. It doesn't take that into consideration. Whereas MBA does, right? So a marketing strategy that can be used in US cannot be used in India, for sure. Here, people are so fucking idiots. They don't understand what potential Paytm has. And those who understand, they'll put money into Paytm. But there are so many people that don't understand the potential of Paytm. Whereas in US, a Paytm-like company would have made trillions of dollars. A company like Tesla is making gazillion. A company like Amazon is making gazillions. तो हमारा जो mindset इतना बोल सकते हैं बेकार है, गंदा है, जो भी है, because हमारा वो exposure नहीं है, हमारे लोग अलग है, हमारी population अलग level है, हमारी education system थोड़ी fucked up है, हमें यहाँ पे इतना अवेयरनेस है नहीं, वहां का जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है और यहाँ का वी कैन नॉट डू। वहां पे तुम इमोशंस पे खेल नहीं सकते, यहाँ पे तुम इमोशंस पे खेलोगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। वहां पे इफ यू मार्केट अ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ like if you like in US, in states, you can market a company which is predominantly into sex toys, can have $1 billion valuation. They're okay with that. In India, you talk about it and people will be like, oh, what is this? तो वो बहुत ज्यादा फर्क है दोनों के बिजनेस में, and that is the reason a company like Amazon could not grow in the country like India initially. It has taken a lot of time for these companies to grow in the Indian market. But अभी कोविड आया, बिजनेस आया, पब्लिक यहाँ पे ग्रो कर रही है, पब्लिक यहाँ पे एजुकेटेड हो रही है, तो हमें वो चीजें पता चलती है। इन यूएस Amazon का वैल्यूएशन ज्यादा होगा, because in US you won't mind ordering your iPhone 13 or iPhone 12 Pro Max, whatever, from Best Buy, from Amazon. You won't be really hesitant to do that, right? In India, even me being so educated, I will not order it from Amazon or Flipkart. मैं जाएगा खुद लाइन में खड़ा रहेगा, वहां से लेके आएगा। तो यार तुम्हारी ना पूरी स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है। बट सर इसका और फाइनेंस का क्या कनेक्शन है? बहुत ज्यादा कनेक्शन है। जब मुझे पता है कि यार Amazon states
कैसे पोजीशन करता है खुद को, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, कितने सारे कस्टमर यहाँ से बाय कर सकते हैं, इसका कस्टमर बेस क्या है, तब जाके मैं बोल सकता हूँ इसका रेवेन्यू आगे कितना आएगा। इंडिया में वो अलग होगा, स्टेट्स में वो अलग होगा। Does this make sense? Yes, sir. बोलो समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ये सीएफए में नहीं आता, ये इंडियन एमबीए में आता है। When I was in IIM Ahmedabad, I did my exit from IIM Ahmedabad. सीएफए सीखना, सीईपी सीखना, थोड़ा बहुत सीएफपी करना, थोड़ा बहुत फाइनेंस करना, फाइनेंस में काम करना, सिम्बाइसिस से फाइनेंस किया, केजी से फाइनेंस किया, इतना कुछ करने के बाद भी I had a different perspective altogether when I went to IIM. वहां पे जो पढ़ा वो अलग लेवल का था, वो टॉप लेवल का था, जहां पे you as a CFO take decisions for the company and then look at a holistic approach, you look at region wise, you look at geography wise. तो जितना तुम फाइनेंस में घुसे होगे ना वो बहुत डायनेमिक होते जाता है, because why company market? Money. Why do you use Six Sigma? To reduce your cost? Money. Why do you need HR? Because you need a good employee to work for you, so that training cost कम हो जाता है, नए नए जो हायर होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा टाइम जाता है, again you save money. So finance is just it's heart of the entire world, the entire organization. तो ये बहुत जरूरी है, and finance का perspective बहुत अलग है। तुम सीए को पूछो फाइनेंस क्या कर लिए, सिंपल है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कैश फ्लो है, बात खत्म। You ask me, for me finance is the world. I mean finance is everything. You cannot do marketing by not considering your financial situation. You cannot put in billions of dollars if you don't have them. तो ये चीजें बहुत समझना जरूरी है। Apple, Tesla, Amazon, Best Buy, all these companies, right? All these multinational companies, they cannot exceed उनका budget on the marketing. If they don't have cash flow, कैसे करेगा marketing? So they alter their market. हमको लगता है कि मार्केटिंग करने के बाद पैसा आता है, बट वो करने के लिए भी पहले पैसा लगता है, ऑल्टर। ये चीज है। दूसरी बात, ऐसे मतलब 4-5 बात हो गए, मतलब आदत है मुझे लाइक सेकंड पॉइंट कहने की, बट आप नोट डाउन करना। my question to you all is, now पूरी दुनिया में स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, राइट? यू ऑल नो दैट पूरी दुनिया में स्टार्टअप कल्चर चल रहा है। You tell me, अगर मुझे एक स्टार्टअप को वैल्यू करना होगा, एक कंपनी अगर मुझे उसको बेचना है, राइट? तो वो कंपनी को बेचने के लिए मुझे सीएफए चाहिए या मुझे एमबीए फाइनेंस चाहिए? बोलो। I think MBA finance. सीएफए चाहिए कि एमबीए फाइनेंस चाहिए? MBA finance. MBA, sir. एमबीए फाइनेंस, राइट? I'll tell you why. Because सर स्टार्टअप है, उसका पैसा ही नहीं बना है, तुम क्या बेचेगा उसको? Because in startup you don't sell the company, you sell the idea, you sell the business, right? You're getting the point what I'm saying, right? So let's just say that startup is XYZ. It's a Nykaa was the startup idea, बेचा तुमने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, pumped in the money, great, Nykaa बन गया। अब Nykaa लिस्टेड है, जब Nykaa बिजनेस एक्सपेंशन के लिए जाएगा तब पहला Nykaa का फाइनेंशियल्स देखा जाएगा। अगर Nykaa जाता है वर्ल्ड बैंक के पास, वर्ल्ड बैंक तो खाना नहीं करेगा, बट अगर Nykaa जाता है किसी बड़े कंपनी के पास और कहता है कि ना मुझे फंड्स दे दो बिकॉज मुझे एक्सपेंशन करना है, वो बोलेगा बिजनेस छोड़, पहले फाइनेंशियल्स दिखा। तो गाइस ये शिफ्ट हो जाता है, आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाता है जब आप ये चीजें करना चालू करते हो। I'll tell you one of my experience. I had an opportunity to work in one of the boutique investment bank based out of Hong Kong, and what we're trying to do, there was this company based out of Spain, European company. वो लोग क्या करते हैं, जो रेत होती है ना रेत, तो उनके पास एक ग्लास बनाने का तरीका था, वो एक मटेरियल था ग्लास का, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने ये कहा था कितनी भी बारिश हो या फिर जब आपको सैंड स्टॉर्म भी अगर आ जाएगा ना आपका, तभी भी आपकी जो विजिबिलिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। एंड दे मेड इट प्रिडोमिनेटली फॉर डिफेंस एरिया, बिकॉज डिफेंस के जो जेट वगैरह होते हैं वो ऐसे कभी कभी सिचुएशन जाते हैं,
फॉग होता है, स्नो होता है, डस्ट होता है, कुछ भी, तो उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल भी हैम्पर ना हो. दे शुड हैव क्लोज टू 99% विजिबिलिटी सो दैट यू कैन अटैक योर एनिमीज. तो उन लोगों ने वो ग्लास का मटेरियल बनाया था. सो वी हैड एन अपॉर्चुनिटी to connect that Spain wala, it's a Spanish company, very small company, but great potential in the business. We could connect them with Lockheed Martin. Who's Lockheed Martin? Lockheed Martin is US ka right hand. I mean, that's the number one company in the world, I would say. Pura defense ka production Lockheed Martin karti hai. So when we were on the call with the CFO of Lockheed Martin, I still remember they were looking into the financials of a company wherein they were trying to acquire. तो अभी मेरे को तुमको acquire, देखो बिजनेस तो अच्छा है, ग्लास ग्लास आप बनाते हो, तगड़ा है, कोई बात नहीं, हमको बिजनेस तुम्हारा अच्छा लगा, बट अभी हमको आपको acquire करना है. तो जब लॉकहीड मार्टिन को उस कंपनी को acquire करना था, तो पैसे की बात आती कि भाई क्या वैल्यूएशन होगा, कितना मुझे तुमको देना पड़ेगा, जितना मनी मैं आपको दूंगा, जितने में आपको मैं बाय करूंगा, क्या वो फिजिबल है मेरे लिए, बिकॉज आई एम ऑलरेडी अ लिस्टेड कंपनी. मेरे शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स गोना आस्क मी कि आपने इसको इतने में क्यों बाय करा, राइट. अब हर कोई फेसबुक नहीं होता जो व्हाट्सएप के लिए $19 बिलियन दे, राइट. तो उसको भी क्रिटिसिज्म बहुत झेलना पड़ा फेसबुक को कि आपने इतना पैसा क्यों डाला करके. बट नाउ मे बी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि इट वाज वर्थ $19 बिलियन एनीवे. So when we were talking to the management of Lockheed Martin, they were more keen on understanding the financials. And I remember we had a talk, like I could speak only for 3 to 4 minutes, wherein I was able to explain the IFRS treatment to the financials. Because अगर आप financials, अगर आप IFRS अप्लाई करते हो तो कंपनी थोड़ा बेटर दिखता है फाइनेंशियली. अगर आप यूरोपियन गैप लगाते हो तो कंपनी इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता फाइनेंशियली. तो यूरोपियन गैप से अगर आप चलोगे, उनकी जो गैप है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अगर आप लगाते हो तो लॉकहीड को कम पैसा देना पड़ेगा, पर IFRS में उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज़ IFRS इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड. सो वहां पे वो डिस्कशन चल रहा था, दैट वाज प्रेडोमिनेटली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. वो एक चीज होता है फाइनेंस का. तो एज ए कंपनी पहले आप स्टार्टअप होगा, विल सेल द बिजनेस आइडिया, पैसा बाद में आएगा. तो जितना आपका बिजनेस अच्छा है उसके बेसिस पे वैल्यू डिसाइड होगा कि इतना पैसा इनको मिलना चाहिए, 10x 12x व्हाटएवर इज द वैल्यूएशन. बट वाज द कंपनी सेटल, उसको फंक्शन करने के लिए ऑन अ डेली बेसिस यू वुड नीड a strategic finance knowledge which probably CFA can give you, not the MBA finance, and probably CA can give you, because जब तुम कमाते हो तुमको रिजर्व डालना पड़ेगा, सरप्लस डालना पड़ेगा, एंट्री पास करना पड़ेगा, बहुत काम होता है. That's where CFA will come into picture. But again, is it the best qualification? It's not. But can MSc give me that exposure? Yes, because MSc will also teach you a bit of management, too much of finance, backed by the expertise of the panelists or the faculties in Jamnagar Bajaj, and again it's known for finance. तो ये सब चीजें अगर आप देखोगे ना broader perspective पे, तो MSc Finance looks pretty lucrative, provided आगे जाके आपको उस टाइप का प्रोफाइल मिले, या फिर आगे जाके आपको उस टाइप का एक प्लेटफॉर्म मिले जहां पे अपनी प्लेसमेंट अच्छी हो. आपको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला तो पंगे होने हैं. बट कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, दे आर वर्किंग एज इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट and they're quite happy for the fact they have a great knowledge of finance and management. At the same time, they've been able to build some real good financial models for their clients, and they've been really doing great. They're happy, got promoted, working with like top 10 business companies in the world currently, right? Blackstone वगैरह में भी है बच्चे. तो ये मैटर करता है. Does that help you to understand why MSc Finance versus CFA? वीडियो वापस एक बार देख लेना, पॉइंट जॉट डाउन कर लेना. Does that help, guys? Yes or no? Yes, sir. Any questions so far? सर माइंडसेट डेवलपमेंट एमबीए वर्सेस फाइनेंस में वो कैसे एक्सप्लेन करना है? क्या माइंडसेट डेवलपमेंट जो 5th नंबर का पॉइंट है, तो एमबीए में भी माइंडसेट डेवलपमेंट होगा ही ना? एमबीए में माइंडसेट डेवलपमेंट होता है हर एक चीज के लिए. तो आप जनरल मैनेजमेंट पे काम करते हो. एमबीए मतलब जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन. जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन. तो एमबीए में थोड़ा मार्केटिंग भी सोचते हो, आपको मार्केटिंग का भी पढ़ाई करना है, फाइनेंस भी करना है, स्ट्रेटजी करना है, सब करना है. यहाँ पे आपको डे 1 से फाइनेंस करना है. सो यू बिकम दैट फाइनेंस किड कि नहीं मेरे को फाइनेंस ही करना है. उधर आप डाइल्यूट नहीं हो सकते. फाइनेंस वाले प्रोग्राम में आप डाइल्यूट नहीं हो सकते कि मैं मार्केटिंग भी करूंगा. नो,
you're studying pure finance, that's how it develops your mindset. To be very honest, if I were to give you an example, maybe it cannot be a great comparison, but studying BCom and studying CA, अब समझा CA का माइंडसेट क्या होता है और BCom का माइंडसेट क्या होता है? BCom वाले को भी फाइनेंस आता है, CA को भी फाइनेंस आता है, but CA का लेवल ही अलग होता है because वो फाइनेंस का कीड़ा है. He knows every bloody single thing in finance, but BCom वाला will not be able to tell you that because he has so many things to look after, right? That's the bifurcation, that's the difference, and that's the reason mindset development. Hope that helps you. Guys, any questions so far? Guys, समझ रहा है या बाउंसर जा रहा है या हाई लेवल पे जा रहा है? समझ रहे हैं सर. समझ रहे हैं. समझ रहे हैं ना? हाँ, बस इतना. जब मैं कहूंगा तब मैं आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव बताऊंगा. आपने बस इसको ध्यान से सुनना है, नोट डाउन करते रहना है, आपका आंसर फाइनलाइज करना है, आपका आंसर आपको रेडी रखना है. अगर आप वो करोगे, you should be fine. Hello sir, can I ask the question? बोलना. Sir, actually, I'm an engineer and I'm currently working with a like, for last 2.5 years. So in IT company. So if they ask me like, hello. Yeah. So if they ask me like, you are currently working for like 2.5 years in IT and now why you want to switch to finance? So how to tackle this? Okay. So I why have finance? my own reasons. Why finance after engineering? Right, very nice. Okay. See, number one, first of all, you did an engineering. You did your engineering because I'm not sure you did it by yourself or you were told by your parents that you do the engineering. Number one, I'm not sure you did engineering with respect to your interest towards engineering or it's a social status कि हमारा बेटा engineer है. I'm not sure about that, right? So you can say that when I was doing my engineering, I had no perspective. And most of the time, after 12, people do opt for engineering if you have a science background or something like that, right? But over a period of time, you spend 4 years, then you spend around about 2.5 years in the IT. IT is a good job, IT is a great industry, but you believe that you want to get into a profile wherein it doesn't become monotonous to you. So what you intend to do is that's the first answer. So what you intend to do is you want to do finance as a career and then get into IT company. Maybe you can go back to the same company and work in IT company as a business analyst. So you know IT as a business because you're an engineer plus your work is, and then you finance also. Now why finance coming into picture? Because IT company का जो भी business है ना, around about 50-55% जो business है IT company का, वो banking and finance company से आता है. तो जितने आप देखो बड़े Infosys and TCS and all, जो top notch companies है, Goldman, Morgan, JP Morgan, Deutsche, ये सब इनके client है. तो as a business analyst तुमको finance भी आता है और तुमको engineering भी आता है. You are a deadly combination. And a business analyst is a mediator between client and a company. So that helps you. That's number one. Number two, you love finance because it's more of, it's just finance is not all about learning balance sheet and blah blah blah. Finance is also important for you all to take care of your own finances. Because आपको वो भी जानना है कि ठीक है जब आगे जाके मैं कमाऊंगा, जब मेरा पैकेज 25-30 लाख का होगा, जब मंथली मेरे हाथ में राउंड अबाउट लेट्स से 1.5-2 लाख आएगा, how I'm going to do the investment? Because I don't want to be a person who will be putting 1 lakh rupees or 50,000 rupees every month in mutual fund. I don't want to be that guy. So I want to also know that how I can take my financial decisions, because in India it is a little sad thing that in India the financial literacy is pretty bad, and you guys can definitely agree with me on this. कि हाँ सर इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों को है नहीं है, एंड फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों को है नहीं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एफडी, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस यही चीजें हम इन्वेस्टमेंट में करते हैं. whereas आज अगर हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो लोग क्रिप्टो में पैसा नहीं डालना चाहते. अगर हम बात करेंगे शेयर मार्केट में अभी पैसा लोग डाल रहे हैं बिकॉज शेयर मार्केट इतना टूटा था कि लोगों को लगा अभी पैसा डाल दो तो पैसा बन जाएगा, और एक रैली थी, वो एक मोमेंटम था जिसमें सब लोगों ने हाथ धो ली. तो डूइंग एमएससी काइंड ऑफ अ प्रोग्राम will also help me to understand, to have my own financial perspective towards my money. ये भी एक चीज है. दूसरी, yes, you like finance, it's not monotonous like IT, it's quite dynamic, changes होते हैं, there are a lot of opportunities in finance. ये एक reason. एज में
Very simple reason. And one of the most, I would say, humble and straightforward reason is that, sir, I know myself very well. I know my personality very well. I can't do marketing. I can't do HR. I can't do operation. Finance, I feel that I can do. That's the best option for me. Done. अब सामने वाला तेरे को ये नहीं पूछ सकता कि तू फाइनेंस ही करेगा. That's a fucking my choice. Like मेरे को पता है मुझे नहीं पता कि मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ. I can't do marketing. I can't do HR. I can't do ops. मैं फाइनेंस कर सकता हूँ. That's my choice. तो इतने सारे आंसर्स आप लगा सकते हो आपके लिए. Does that make sense? Does that make sense? Definitely. Thank you. Is there any question you have on the following thing? Any question? Sir, I mean, okay. I had a question, not regarding this. So basically, since we are discussing about MSc Finance, MBA, you told quite a few points. But my doubt is, would further, in the future years, after doing MSc, would someone need to do an MBA, like, for the corporate ladder? No need. Okay. No, I'll tell you why. I heard you very well. I'll tell you why. I give an example of CFA. CFA बंदा करता है ग्रेजुएशन के बाद वो एक कंपनी ज्वाइन करता है, कंपनी में काम करता है, कंपनी का वो नो हाउ बराबर से ले लेता है. कंपनी किस में काम करता है, कंपनी का फंडा क्या है, मैनेजमेंट क्या करता है, तो 5-6 साल के बाद उसको कंपनी का बिजनेस अच्छे से समझ में आता है और खुद बंदा काम करता है, एनालिस्ट लेवल पे काम करता है, बाद में वो टीम मैनेजमेंट में चले जाता है, उसको मैनेजमेंट भी साइड बाय साइड पता चलने लग जाता है. तो आगे जाके उसको एमबीए करने का जरूरत नहीं है. तुझे एग्जीक्यूटिव करना है कर ले. मैंने जैसे करा, मुझे पढ़ने की इच्छा थी, मुझे चाहिए था कि यार मैं और थोड़ा सा पढूं. आई एम स्टिल लुकिंग फॉर सम एवेन्यू जहां पे मैं और पढ़ाई कर सकता हूं. तो अगर आपको मेरे जैसा पढ़ाई का कीड़ा है तो आप कर सकते हो, बट इट्स नॉट नीडेड. सो व्हेन यू डू एमएससी, you are getting an in-depth knowledge in the field of finance. You can move ahead. You can start a company. I mean, you can start a job with the company. You can start working in the corporate world. Build on your knowledge eventually, and then you will be grabbed. Now, I'll give you a very royal example. Fund manager कैसे बनते हैं लोग? Fund manager तुम एक दिन में नहीं बन सकते. So, fund manager के साथ एक टीम होता है. That is called as equity research analyst. So, let's say ICICI का CIO, निरेन, okay? उस बंदे की टीम होगी पूरी. उस हर एक टीम का टीम लीडर होगा. तो BFSI का टीम लीडर एक होगा, उसके नीचे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट होंगे. फार्मा का एक टीम लीडर होगा, उसके नीचे कुछ पुट्टे होंगे, लाइक 5-10 लोग होंगे. ऐसा करके बहुत बड़ा टीम होता है. So, what happens? You, as a person who's been observing or tracking pharmaceutical as a sector, you'll keep doing equity research, you'll keep doing financial modeling, blah blah blah. You'll send that report to your team leader. Your team leader will send that report to the CIO, the main guy, and then you'll see. ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी के वैल्यूएशंस कैसे दिखते हैं, उसको सब नॉलेज है, उसको सब पता है, वो टॉप लेवल पे बैठा है कि ठीक है कैसा वैल्यूएशन दिख रहा है, क्या स्कोप है, क्या फंडा है, क्या बिजनेस बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा. तो उसको फाइनेंस भी पता है, उसको बिजनेस भी पता है. वो फंड मैनेजर है, वो 20 साल से काम कर रहा है, उसको इकोनॉमिक भी पता है, उसको इकोनॉमिक्स भी पता है, उसको पॉलिटिक्स भी आता है. सो ही नोस एवरीथिंग. देन व्हाट विल डू, he'll just look out for a number, he'll just check कि एक्सेल में क्या दिया है, 2x 3x 3x, this makes a lot of sense. On that basis he will take his decision. तो फंड मैनेजर कैसे बनते हैं? यही जो लोग होते हैं जो ग्रो करते हैं slowly move ahead and become fund manager after 15-18 years. तो यहाँ पे आपको फाइनेंस का नॉलेज होना जरूरी है. प्लस अंदर जाओगे, काम करोगे, थोड़ा सा बिजनेस समझोगे, कान खुले रखोगे, सब चीजें समझ में आएगी, इवेंचुअली आप ग्रो करोगे. नॉट नेसेसरी कि आपको एमबीए ही करना है. Perfect, sir. Got it. Yeah, got it. मेरे बैच में था एक, मेरे बैच में टाटा कैपिटल का एक था फंड मैनेजर, जूनियर फंड मैनेजर, नॉट द एक्चुअल फंड मैनेजर. सो ही केम टू IMA. ही वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. He was a rank holder. It was in 100 somewhere. So he started. He was like, I want to do exec because I'm looking for more knowledge, the business वाला knowledge. Because अगर मैं करता हूँ ये brand से मुझे help होगा, I can probably go over the ladder up. तो करना है तो कर सकते हो, but not necessary, to be very honest. This can sort your career. ठीक है? Next. Yep. Perfect. Next. Anything else?
Sir, I have a question related with the admission and the GDPA process because we haven't uploaded any resume. So, what can we expect from their side? You haven't uploaded any resume. But we have Yeah, uploaded certifications, no? they didn't. We have uploaded all the details. Yeah, we have uploaded ठीक है certifications. ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम. तो अगर आप देखोगे आपको जहां तक ये सर्टिफिकेशन का सवाल है, आपको क्वेश्चन सर्टिफिकेशंस में आने वाले हैं कि आपने क्यों करा, किस चीज के लिए करा, क्या रीजन था, ये कैसे आपको हेल्प किया, सो एंड सो, राइट. फाइन, ये दो क्वेश्चन आज हमने करे हैं. नाउ आई टेल यू टू डू लिस्ट, करना क्या है हमें आगे. ठीक है. नंबर 1, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको बहुत ज्यादा मार्केट में देखना है क्या चल रहा है. मार्केट मतलब नॉट द स्टॉक मार्केट, द एंटायर इकोनॉमी, राइट. अगर आप इंजीनियर हो तो थोड़ा करंट अफेयर पढ़ना चालू करो. अगर आप कॉमर्स वाले हो तो बेटा समझ लो कि आपको फाइनेंस के क्वेश्चंस आएंगे. पूछेगा बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है. कुछ नहीं पूछेगा आउट ऑफ द सिलेबस, दैट्स फॉर श्योर. जितना तुमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसी के ऊपर तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, बाकी कुछ भी नहीं होगा. टुमारो आई विल डू योर पीआई का क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, probably we can do, if not MSc then what, why jbims for MSc, so and so forth. प्लीज कोई नोट डाउन कर लेना ताकि कल आते ही ये चालू हो जाए. ठीक है. सो आई वांट यू गाइस टू काइंड ऑफ फोकस ऑन दीस थिंग्स. अगर आप सीए वगैरह हो, अगर आपने पहले कुछ करा है सीए वगैरह, गो नो ब्रश अप योर बेसिक्स वेरी वेल. ज्यादा कुछ करने की आज से जरूरत है नहीं, बिकॉज आप जितना करोगे उतना कम है. इतना बड़ा इकोनॉमिक्स है, इतना बड़ा फाइनेंस है, आप हर एक चीज नहीं कर सकते हो. इट्स नॉट गोइंग टू बी रियली feasible and possible also. So please don't do that. It's not going to help you to cover everything. मुझे लगता है कि बेसिकली जो अभी चल रहा है, खाली न्यूज पढ़ना चालू कर दो. डेली बेसिस पे 2-3 पेपर अपनी आंखों के नीचे से निकालो. एटलीस्ट एक आइडिया आएगा मार्केट में क्या चल रहा है. अगर एक आधा कंसेप्ट बहुत तोफ है तो उसके बारे में पढ़ना चालू करो. जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कुछ तो स्कीम निकाली है आरबीआई के लिए, राइट. वो स्कीम क्या है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. वो कैसे हेल्प करता है वो जानना आपको बहुत जरूरी है, राइट. So that's something you need to do. ठीक है. मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको कहा था आईपीओ वगैरह आपको करना बहुत जरूरी है. आई होप यू गाइस हैव बीन वर्किंग ऑन दैट. आई होप यू गाइस हैव बीन वर्किंग ऑन दैट. Yes, sir. One Yes, more sir. Yes, question. sir. Yes, sir. बोलो. Sir, can we get some questions on farm bills recently, which was announced today by Narendra Modi ji? No, I don't think so. No, no. Okay. No, I don't think so. Fine. Anything else? Sir, how can we relate engineering with MSc Finance directly if we do not have any work experience? You don't have to relate that. Do not relate your engineering with MSc Finance. Very simple thing. आपको वैसे भी एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है because 85% of the engineers are working in the finance domain. तो वैसे भी आपका लाइफ वहाँ पे सेट है. आपको कुछ ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है वहाँ पे. You don't have to connect कि मेरा engineering MSc Finance के साथ कैसे कनेक्ट है. No. Engineering is a graduation degree. MSc is basically a master's degree. And anybody can do finance. कोई ऐसा constraint नहीं है, कोई ऐसा limitation नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो. So you say that you want to do it because of the interest. जिसका रीजन मैंने दिया था. अपना जो यहाँ पे स्टूडेंट था जो 2.5 साल का वर्क एक्स लेके आया है, उसको जो मैंने आंसर दिया वही आंसर आप दे सकते हो कि क्यों करना है आपको, वाई फाइनेंस ले. सो वो आंसर आपका वहां पे सूट होगा. डोंट ट्राई टू कनेक्ट योर इंजीनियरिंग विद एमएससी. हाँ, अगर आपको कोई सब्जेक्ट है जो आपने एक्सप्लोर करा था ड्यूरिंग योर इंजीनियरिंग तो आप बोल सकते हो बिकॉज ऑफ दैट सब्जेक्ट आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ, आपको इंटरेस्ट आना चालू हुआ टुवर्ड्स फाइनेंस. फिर आपने थोड़ा स्टॉक मार्केट वगैरह देखना चालू करा, आपको लगा कि नहीं यार ये अच्छी चीज है, दिस इज समथिंग आई कैन डू. प्लस बीइंग एन इंजीनियर हैविंग good abilities with respect to number crunching, I think finance can help me. And again, the entire if you look at the fraternity of engineers, they are doing quite well as far as the finance domain. So I want to go for finance. Like that you should be developing your answer and not being very straightforward कि मेरा engineering से मैं finance कैसे connect करूँ. करना भी मत, वो possible भी नहीं है, right? Work नहीं होगा तो भी चलेगा, doesn't matter. But they want an honest answer. because सबको पता है आप क्यों जा रहे हो. As an engineer आप finance क्यों करते हो वो सबको पता है. But I want to understand, like, are you being really genuine? अब मैं भी नहीं बोल सकते कि बाकी मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो मैं कर रहा हूँ. हम ये भी नहीं बोल सकते. But हम अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं एक हर चीज में. तो वो तो बोलेगा तुम्हारा कुछ बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं, वो नहीं. But that's okay, sir. I want to give it a shot and I want to try because I don't think that everything can be done with the background or knowledge, right? Because when we got into 11th standard, 10th standard का कोई बैकग्राउंड नहीं था 11th 12th के लिए. And 11th 12th के बाद बच्चे छोड़ के कॉमर्स में आ जाते हैं.
उनका भी कोई connection नहीं होता. So I'm trying to more trying more towards the exploring these things, and I think marketing, operations, and HR is something I really don't want to do. Finance is something that can help me for my own also, and working in the corporate also. Also, a couple of my friends have been working in the finance as an industry. They are like me, engineers. My seniors are there, and I've got a great feedback from them. So they say that engineers are a good fit as far as finance is concerned, and that is the reason I'm just following the trend. Simple. ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना. अगर आप तोड़ मरोड़ के उसको खींच के अगर आप बोलोगे कि इंजीनियरिंग और फाइनेंस कनेक्टेड है, तो सामने वाला स्मार्ट है, वो समझ जाएगा, फिर वो बहुत केस लेगा आपकी. You should not do that. Okay, sir. Thank you. फिर बोलेगा आपके पास स्किल सेट नहीं है, आप कैसे कर लोगे? बोला सर, I have done the engineering, the toughest qualification on the earth. I have managed to do engineering very well. I will be studying when I get into MSc. Rather, it's actually helpful because I do not come from a finance kind of a background. I won't be taking anything granted because probably when you know something, you take things granted when you go for master. But finance, being it's new for me and I'm so much interested in it, I think I will be paying a lot more attention towards my education or towards my studies and towards the subjects. So in a way, if you look at it, is actually going to help me, or it is actually going to help me to stay glued to my subject. So that helps me. तो आपको ये बोलना है, ये इस तरीके में आपको बताना है, because बहुत ज्यादा लर्निंग होने वाली है आपकी, because you don't know, and for the fact it's a fresh thing for you, it's a new thing for you, you are up for learning. तो आपको थोड़ी सी वो स्टूडेंट वाली चीज दिखानी कि हाँ, I'm okay to learn, I'm ready to learn, I have that zeal to learn, so and so forth. Is this understood? Yes, sir. Hello, sir. Point. Okay, sorry. Continue. Yeah. Hello. Yeah. Sir, how to justify gap if you don't have any work experience or certificates? Why did you take a gap? Because of COVID, I didn't get a job, so I thought I should do MBA. That was a real reason. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. तेरा क्या इंजीनियरिंग की कॉमर्स है? Commerce. कब हुआ कॉमर्स? Sorry. कब हुआ आपका कॉमर्स? 2019. 2019. ऐसा मत बोलना, ये बोला कि I did my commerce in the year 2019. I had an opportunity to work with a company. I reached in the last interview. I was selected, but then they said that we are actually doing the cost cutting because of Corona, and we are rebooking your offer because of the uncertainties in the market. We're not sure. Because of that, I lost my job. Then I was at home. I thought I can probably explore a lot of things towards the MBA, because then at that point in time MBA was crazy. People were studying from their house. So I started with MBA. I couldn't get through a good B school. At the same time, the stock market was a buzz. So I started kind of putting my heads into it, started liking it, got an interest towards it. So I thought, what, this time I'll go for MSc or I'll go for an MBA. So I thought MSc finance can be a good choice for me. So that's how we can connect. And that is the reason I have a gap. Okay, sir. Thank you. Does it make sense? Sir, Yes. I'm from manufacturing. Hello. Yeah, Shivani. Hello. So, sir, I'm from manufacturing sector, and what kind of questions can come from my sector? I could not hear you, man. कुछ आवाज ही नहीं आया आपका. I'm from manufacturing sector, sir. And what kind of questions can come from manufacturing sector? सेम तुम्हारे फील्ड का जो भी मेन चीज है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा. क्या करते हो काम, क्या काम है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या चीज है, जो भी तुम्हारे डोमेन का है उस पे ही वो बोलेगा. बाकी उधर का कुछ नहीं आएगा. It is a instrument manufacturing company. We make instruments in oil and gas, food and beverage, pharmaceutical. So इसमें कैसे questions आ सकते हैं basically? यार I don't know much about your field honestly, but वो तुम्हारे फील्ड के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप ये काम कैसे करते हो, क्या करते हो. एंड आई थिंक आपका फील्ड बहुत नीश है, तो सामने वाले को भी अगर आइडिया नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन भी नहीं करेगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. और क्वेश्चंस तो वही आएगा कि अगर if you tell me, if you brief me in the mock PI, I'll tell you कि आपके क्या-क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं. But I don't have much idea about it. पर सामने वाले को भी अगर आइडिया होगी तो आपको पता है आपके मैन्युफैक्चरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है. तो I think that should be more than enough for you to know. But don't expect something on a very high level. Don't worry about that. Sir, somebody was trying to speak. Sir, I have 2 gap years. How do you think I should justify this? क्या कह रहा है, वापस एक बार बोल. Sir, I had 2 gap years. 2 years of gap years. Yeah. अच्छा, okay. Actually, I did my engineering. I opted for engineering after my 12th. So 2 साल engineering किया, then I went for BBA, sir.
इंजीनियरिंग किया उसके बाद तू कहाँ गया? 2 साल engineering किया, then I went for BBA. I could not get you man. इंजीनियरिंग किया उसके बाद? He said he did 2 years of engineering and then he went for BBA. So that 2 years is a gap. Basically. Oh, doesn't matter. That gap doesn't matter. That gap doesn't matter. Don't worry. Academic gap doesn't matter. Academic gap doesn't matter. Okay, sir. Sir, any work-ex, common work-ex questions related to work-ex? हाँ, common work-ex के questions मैं आपको बता देता हूँ. That's a good question. कितने साल से कंपनी में काम कर रहे हो? कंपनी किस बारे में है? कंपनी का प्रमोटर कौन है? कंपनी का लिस्टेड है, मार्केट कैप क्या है? कंपनी का सीईओ कौन है? कौन से मेन बिजनेसेस है? कौन से बिजनेस से ज्यादा पैसा मिलता है कंपनी को? रेवेन्यू कहाँ से ज्यादा आता है? आप कितने साल से उस कंपनी में हो? आपने क्या चेंजेस देखे कंपनी में? आपकी कंपनी ने कोरोना के टाइम पे कैसे एडजस्ट किया मार्केट में? क्या चेंजेस लाए आपकी कंपनी ने? हाउ गुड इज योर कंपनी एज फार एज द एम्प्लॉय सैटिस्फैक्शन इज कंसर्न्ड? All that stuff purely based on the company business. सर अगर कंपनी एक स्टार्टअप है तो एनी ऐसे स्पाइसी पॉइंट्स जो हम लोग ऐड कर सकते हैं थोड़ा स्टार्टअप टू मेक देम फील एज इफ स्टार्टअप है थोड़ा हेक्टिक एनवायरनमेंट रहता है स्टार्टअप में लाइक अनलाइक अ नॉर्मल कंपनी जैसे 1 year इन स्टार्टअप इज 7 years इन अ नॉर्मल कंपनी so if we could use something like that to leverage कुछ आपके points I don't know समझ नहीं आया क्या कहा आपने? so if I'm talking about startups so since startups have a different work life a different altogether a different scenario so anything that we could add in the startup sector when we are explaining about workings to make it a little more hype to be very honest with you. You can see that it's quite challenging and you have to be on your toes all the time. You have to do everything right from front end to back end and being a startup there is no room for mistakes, right? You don't have backups. The full time employees are quite less, so you are actually asking for 3 people, so you have been putting in a lot of efforts. You got to be very quick, you got to be very sharp, no room for mistakes, you got to be proactive, you got to take a lot of responsibilities on your own, and it's a one man army when it comes to startup. Perfect. And at the same time if you're working on a project जहाँ पे तुझे पता ही नहीं है कि तू एक आइडिया पे काम कर रहा है तो वो जो आइडिया है उस कंपनी का फाउंडर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, so you got to be ready for failure also, but you have to keep on trying. But that's the startup culture. Okay. Cool. Okay. Guys, we'll stop here for the day. I'll meet you guys tomorrow. Tomorrow आपका लेक्चर थोड़ा लेट होगा, रात में 10 बजे होगा या फिर 9:30 बजे होगा. Please एक रिक्वेस्ट है कि पूरे पीआई के क्वेश्चंस नोट डाउन करना, so that once I join you, हम पूरा पीआई से चालू करेंगे. Tell me about yourself. Why finance तो मोस्टली कवर करा. MBA वर्सेस MSc फाइनेंस भी इंपॉर्टेंट था, वो कवर कर लिया. MSc वर्सेस CFA कवर हो गया. Anything that you want me to cover? I think एक ग्रुप है आपका. Hello. Yes. Sir, presently I'm working with a bank. So what kind of questions can I expect? Everything. What do you do in bank? I'm in MSME segment. I'm doing renewals of loan, sanction of loan. So. Sanction of loan sanction. Yeah. तो आपको क्रेडिट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप जब लोन सैंक्शन करते हो तो सामने वाली कंपनी का क्या फाइनेंसेस देखते हो, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देखते हो, डू यू डू रेशियो एनालिसिस, हाउ डू यू चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ दैट कंपनी, व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर द डिफॉल्ट, व्हाट आर द एनपीएस, राइट? इन व्हाट सिनेरियो यू गाइस चेक द लोन, राइट? what is the provision of bad debts in your bank, कितना परसेंट एमएसएमई बिजनेस देता है आपके बैंक को, एवरीथिंग. Okay, everything. Okay, thank you. मोटा मोटी ये आएगा, बिकॉज ब्रॉड लेवल पे यही वो चीजें जान सकते हैं, वो इतना डेप्थ में नहीं जाएगा. बट हाँ, अगर मैं आपका इंटरव्यू लूं तो मैं ये क्वेश्चंस फटाफट कर दूं कि एमएसएमई क्यू फंडिंग में क्या फायदा है. सो एमएसएमई फंडिंग वर्सेस हाउसिंग लोन का फंडिंग, या फिर हाउसिंग लोन जैसा कुछ फंडिंग, या फिर पर्सनल लोन, कहाँ पे ज्यादा मार्जिन होता है, बैंक बिजनेस कैसे जनरेट करती है, डू यू थिंक एमएसएमई इज ए लॉस मेकिंग सेगमेंट और अ प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट फॉर अ बैंक. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट डोंट वरी, आप वहां पे काम कर रहे हो तो स्पॉन्टेनियसली आप आंसर भी दे सकते हो. Okay, sir. Thank you. Cool. Guys, we'll stop here for the day. Sir, one more last question. From when can we start GDPR rounds, personal interviews, one-on-one sessions with you? I'm waiting for your dates to get out. Okay. Is that the top 300 list? I mean, after that. Okay. Sir, even if you don't make it to the top 300, can we still, learn from you? Because really cool. So
You can, आपको डैशबोर्ड का एक्सेस दिया है, आप कर सकते हो, not a Oh, I problem. mean like the live lectures, like the live. हाँ, not a problem. मेरा अभी यार बहुत लोड है because of CAT and all. Okay. मेरा there's another company I run, analyst stage, which is in the finance. उसके ऊपर भी बहुत सारा काम pending है मेरा. तो Yeah. you can join eventually, like in future you want to do some courses in finance, you can do that. So that's how it always work. But yeah, you guys can manage. ठीक है? Cool guys, that's it from my side. Take care. ठीक है? Tomorrow time will be confirmed by let's say 5-6 p.m. Being Saturday, a little hectic with the lectures. But आपका कल lecture होगा. Again, we'll try to do your PI questions tomorrow. फटाफट से then one section will be on the GD, just to take your points into consideration कि अगर मैं आपको ये topic देता हूँ तो आप इसमें क्या क्या points डालोगे. तो थोड़ा काम करना आपके current affairs पे. It's quite important. Okay? Yeah. Thank you guys. Bye.